Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 4. The name of the paper is Criticism 1, and the topic is Aristotle's reply to Plato's second objection. We discussed the first objection in lecture number 3, and we'll discuss the second one in this lecture. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PIB, and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The second reply of Aristotle is this. We know that Plato had objected that poets and poetry actually arouse emotions and passions, feelings, which belong to the lowest part of the soul, and therefore these emotions and passions they weaken the reason. A reason is the top item in the soul, in tripartite soul, and if reason is weakened, then something would definitely go wrong with that person. Aristotle agrees with this that yes, uh, poetry, art, they arouse emotions and feelings. But emotions and feelings, the arousal of these emotions and feelings is not harmful. It is, on the other hand, useful for someone whose passions and feelings are aroused. If these emotions are locked up in someone's mind and they are not given a pleasurable outlet, then they may be harmful for those people who have suppressed them. So, suppressing these emotions can cause different psychological diseases like psychosis and neurosis. And though reason should be there, but it should not completely wipe out the emotions, passions, and feelings because if they are suppressed, a lot of psychological problems would arise and it would add to the moral hypocrisy of the person and would cause mental disorders. Moral hypocrisy means that the person who is suppressing the emotions and passions actually want to express them, but yes, suppressed them, creating a kind of hypocrisy in him. So, therefore, the important thing is that these emotions and passions are given a proper and socially acceptable outlet, which is referred to as pleasurable outlet, but which must be acceptable to society, acceptable to religion, and it should be proper. So these emotions should have an expression rather than suppression, and if they are given a harmless outlet um, is given to these emotions, then it would be better. This was Aristotle's idea that expression of the emotions is something which makes a personality balanced and which save you from psychological diseases. The same idea has been expressed by Sigmund Freud, and he also tells us that the problem is actually not expressing the desires. That is the problem. Crushing the problem is not crushing the desires is not something good. Not expressing the desires is not something good. The best thing is to give them a pleasurable outlet. If you do not express them, they are pushed back to subconscious, but that is not the end of those desires and emotions. Aristotle tells us that there should be a pleasurable outlet for these emotions, and this pleasurable outlet is referred to as catharsis. He uses the word catharsis for it. Catharsis means that you are given a pleasurable outlet when you watch a drama. Someone who has been, for example, jealous, and that jealous person dies or suffers, a kind of catharsis happens, and we are purged of those harmful emotions which arouse in us. And when we go our homes after watching the drama,
or emotions are sublimated. Freud uses the word sublimate. They are changed from worse to better condition, and therefore this catharsis or sublimation, as was used by Sigmund Freud, is good for making a good psychological personality. So therefore, a transmutation of emotions or this change of emotions is important for the personality. Catharsis, in a way, also means that the lower form of emotions are transformed to a high form. By this, he means that the emotions are purged and the emotions which were harmful to us, they are changed to something which is useful for us. So, this pleasurable outlet is called catharsis by Aristotle and sublimation by Sigmund Freud. In short, we can say that Aristotle's reply to the second objection, the second objection was that poets arouse emotions. Aristotle gives the reply that yes, they arouse emotions, but these emotions are then given pleasurable outlet in the shape of catharsis, and as a result, people are saved from psychological diseases because suppression is not the solution. Expression is also not the solution, but pleasurable outlet is the solution. For example, if we take the emotion of sex, that is not to be expressed in all forms and shapes, but at least there is a pleasurable outlet for it, and that is in our religion getting married. So, just like that, he tells us that emotions are not only to be suppressed, some pleasurable outlet is to be given. Drama gives us that pleasurable outlet, which Greek considered as poetry, form of poetry, and therefore, watching drama or watching literature or writing poetry, it gives a pleasurable outlet to those emotions which have been aroused by poetry. So poetry arouses them, and then poetry um, gives a pleasurable outlet also to these emotions, which creates a balanced personality. And suppressing the emotions is not natural, and it will, instead of giving benefit to the people, these suppression of emotion will actually harm these people. So it is uh, good for the society that the emotions are aroused and given a pleasurable outlet according to Aristotle and also according to modern psychology. ये उसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है अरिस्टोटल का. अरिस्टोटल जवाब देता है प्लेटो का कि प्लेटो ने कहा ये पोइट्री इमोशंस अराउज करता है. कहता है ठीक है, ये इमोशंस अराउज करता है क्योंकि इमोशंस का दबाना ये मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का सबब बन सकता है, ये मुज़िर है. और रीज़न तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन रीज़न मुकम्मल तौर पे अगर इमोशंस को वाइप आउट करेगा तो ये वाइप आउट नहीं होंगे, सप्रेस नहीं होंगे, बल्कि ये सिर्फ हमारे सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस में धकेल दिए जाएंगे और ये ख़त्म नहीं होंगे. तो लिहाजा ये होना चाहिए कि इन इमोशंस के लिए एक प्लेजरेबल आउटलेट हो. शायर ये प्लेजरेबल आउटलेट मुहैया करता है. ड्रामेटिस्ट को भी शायर समझते हैं वो, और ड्रामे की शक्ल में ये एक इमोशंस को प्लेजरेबल आउटलेट मिलती है. और इस प्लेजरेबल आउटलेट को अरिस्टोटल ने कैथारसिस कहा है. हजारों साल बाद मॉडर्न एज में फ्रॉइड ने इसको सब्लिमेशन कहा है, और वो भी यही बात करता है कि इमोशंस दबाना इलाज नहीं है, इमोशंस के लिए एक मुनासिब आउटलेट होना ज़रूरी है, और ये ड्रामेटिस्ट और पोइट ड्रामा और पोइट्री की शक्ल में मुहैया करते हैं. तो पोइट्स अच्छा काम कर रहे हैं, न कि बुरा काम कर रहे हैं.
I'll read it for you too. ये समरी है इसकी कि सप्रेशन है हार्मफुल है और एक्सप्रेशन हार्मफुल नहीं है. ये आइडिया द सेम आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय फ्रॉइड. Aristotle used the word catharsis, Freud used sublimation. ये समरी है सारे की. Plato had said that poetry nourishes the emotions and feelings. प्लेटो का ख्याल था कि पोइट्री ये इमोशंस और फीलिंग्स को हवा देता है एंड वीकन्स द रीजन और हमारे रीजन को कमजोर करता है. अरिस्टोटल एग्रीज दैट पोइट्री अराउजेस फीलिंग्स. अरिस्टोटल ये मानता है कि ये फीलिंग्स को अराउज करती है पोइट्री, बट ही डज नॉट कंसिडर इट टू बी हार्मफुल फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैन. लेकिन वो इसको नुकसानदेह नहीं समझता इंसान की इखलाकी डेवलपमेंट के लिए. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ही बिलीव्स दैट इफ फीलिंग्स एंड इमोशंस आर केप्ट लॉक्ड अप, कि फीलिंग्स इमोशंस को अगर बंद रखा जाए देन दे बिकम हार्मफुल फॉर हेल्थी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैन, तो ये इंसान की मॉरल सेहत के लिए नुकसानदेह है. ही सेज दैट रीजन शुड बी देयर बट इट शुड नॉट वाइप आउट द इमोशंस. रीजन ठीक है होना चाहिए लेकिन इमोशंस को रीजन वाइप आउट ना करे तो तब बात बढ़ेगी. अगर ये वाइप आउट करे तो फिर मसला बनेगा. इफ फीलिंग्स आर सप्रेस्ड, अगर आप फीलिंग्स को दबाते हैं, दिस क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मसले पैदा होते हैं साइकोलॉजिकल भी और दूसरे भी. इट लीड्स टू मॉरल हिपोक्रेसी, इखलाकी मुनाफिकत भी होती है क्योंकि आप करना एक चाहते हैं दिल में और ज़ाहिरी तौर पे लगता है आपने दबाया हुआ है. एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और जहनी डिसऑर्डर का सबब भी है. इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द मॉरल पर्सनैलिटी ऑफ मैन, और ये इंसान की अखलाकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती है. दी प्रॉपर थिंग टू डू इज़ टू गिव दीज इमोशंस ए प्रॉपर एंड सोशली एक्सेप्टेबल आउटलेट. मुनासिब बात यह होगी कि इन इमोशंस के लिए एक समाजी तौर पे कबूल आउटलेट बनाया जाए. बोथ एक्सट्रीम्स आर रॉन्ग, दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं. एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पर या सप्रेशन मुकम्मल तौर पर गलत है. पोइट्री बाय एक्साइटिंग दीज इमोशंस, पोइट्री जब इन इमोशंस को हवा देता है, गिव्स ए हार्मलेस आउटलेट टू दीज इमोशंस, तो वो इन इमोशंस को बेज़रर आउटलेट देता है. एंड इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ पोइट्री इज नॉट बैड, तो पोइट्री का असर ख़राब नहीं है, बट इट इज़ हेल्दी एंड गुड फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए, अखलाकी सेहत के लिए बेहतरीन है. Aristotle says the same thing as was said by Freud years later. हज़ारों साल बाद फ्राइड ने जब बात की थी वही बात इससे पहले अरिस्टोटल कर चुका है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ मैन इज नॉट एक्सप्रेसिंग डिजायर्स. जो मसला पैदा करती है वो ये नहीं है कि आप डिजायर्स एक्सप्रेस करें, मसला पैदा करती है बट क्रशिंग देम, वो इन डिजायर्स को क्रश करने की बात है. वी सप्रेस अ विश, अगर हम कोई ख्वाहिश सप्रेस करते हैं, वी डू नॉट गेट रिड ऑफ इट, तो इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते. बट वी ओनली पुश इट बैक इन द सबकॉन्शियस, बल्कि आप इसको सबकॉन्शियस में धकेलते हैं. Aristotle did not know about the subconscious, but he says the same thing which was said by Freud later on. Aristotle को सबकॉन्शियस का तो पता नहीं था, लेकिन बात उसने वही की थी जो फ्रॉइड ने बाद में की. Freud used the word sublimation and Aristotle uses the word catharsis. फ्रॉइड का लफ्ज sublimation था और अरिस्टोटल का catharsis. Catharsis means a pleasurable outlet for the pent up emotions. कैथारसिस का मतलब है खुशगवार आउटलेट उन जज्बात के लिए जो आपने रोके हुए हैं. इफ दे आर सप्रेस्ड, अगर आप जज्बात को रोकते हैं, अटेंशन इज क्रिएटेड, तो टेंशन पैदा होती है. अ वे हैज टू बी फाउंड टू गिव देम एन एक्सप्रेशन, तो एक तरीका होना चाहिए इनके इजहार का. ड्रामा, says Aristotle,
gives a pleasurable outlet to the pent up emotions. अरिस्टोटल कहता है ड्रामा इन इमोशंस के लिए pleasurable outlet देता है, बट कैथारसिस मीन्स समथिंग मोर. कैथारसिस का मतलब कुछ और भी. हम कैथारसिस पे डिटेल्ड अलग से लेक्चर देंगे और उसमें और भी वाज़ हो जाएगा. इट ऑल्सो मीन्स आर्टिस्टिक ट्रांसम्यूटेशन चेंज ऑफ द इमोशन, कि इमोशंस आर्टिस्टिकली ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. द लोअर फॉर्म ऑफ इमोशंस आर ट्रांसफॉर्म टू ए हाई फॉर्म. खराब इमोशंस बेहतर इमोशंस में चले जाते हैं. जब हम ड्रामा देखते हैं तो इमोशंस अराउज होते हैं, लेकिन जब ड्रामा ख़त्म हो जाते हैं और ये इमोशन दोबारा जाते हैं वापस अपनी जगह पर, तो इनकी हालत बेहतर हो गई होती है. ए नोबलर प्रोसेस टेक्स प्लेस. एक बेहतरीन अमल होता है. इट इज व्हाट ही मेंट बाय कैथारसिस. अरिस्टोटल्स रिप्लाई इन अ नटशेल इज दैट. अरिस्टोटल की रिप्लाई मुख्तसर तौर पे ये है, it is not the expression but suppression of feelings and emotions which is harmful. is फीलिंग्स एक्सप्रेस का एक्सप्रेशन हार्मफुल नहीं है, इसका सप्रेशन हार्मफुल है फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी की मॉरल डेवलपमेंट के लिए. थैंक यू एंड गुड लक.